आपके प्रेजेंस से दूर ही रहते हैं, तो यू हैव टू कीप इट अप। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। ऑप्शन नहीं आ रहा है, हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा है सर अभी। हेलो, हाँ सर शेयर, हाँ आ रही है सर, आ रही है। थैंक्स सर। ओके। सो एक्चुअली यहाँ सर से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं रिव्यू अकाउंट को मैं पढ़ा रहा था। तो उसके बाद मैं मूव कर गया वहाँ पे, तो यूपी में। तो जहाँ सर ने मुझे याद किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बिकॉज आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर, so I will highlight the role of chemistry and how it can have impact on killing the coronavirus. But before that, I will highlight its timeline and other aspects of हाँ coronavirus. हो गया, शेयर हो गया इनका, चल रहा। बोलिए सर, आप बोलिए सर, आ रहा है। अभी 31 दिसंबर 2019 को, जैसे कि हमारे पहले स्पीकर ने बताया था कि चाइना के वुहान में या अननोन वायरस से निमोनिया के काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए और उन्होंने WHO को अलर्ट किया था। और 7 जनवरी को इसका ऑफिशियल नाम रख दिया गया SARS-CoV, जो कि सिमिलर था SARS वायरस से। और 30 जनवरी वॉज द फर्स्ट डे वेयर दिस वायरस वाज रिपोर्टेड आउटसाइड चाइना। थाईलैंड में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था, और जैसे ही ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रिपोर्ट हुआ, इसको WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया 31 जनवरी को। और जो धीरे धीरे करके ये विस्तार लेता गया, और आज की डेट में ये वायरस इट हैज ऑलमोस्ट स्प्रेड टू एवरी कॉन्टिनेंट एंड ऑलमोस्ट टू एवरी कंट्री of this planet right now. So 31st Jan को 11th मार्च को WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया, एंड इट हैज रियली स्प्रेड सो फास्ट। और उसका रीजन अभी आगे डिस्कशन में बताऊंगा। और आज के डेट में लगभग 6.5 लाख लोग इससे मर चुके हैं, और लगभग 1.6 करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, एंड दिस नंबर इज कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे। तो अभी कोरोना वायरस इज बेसिकली लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस which causes basically flu and other similar kind of illnesses. They are usually found in animals such as bats and camels. और जब भी ये किसी स्पीसीज को जंप कर देते हैं और ह्यूमंस में आ जाते हैं, तो हम ऐसे वायरसेस को जूनोटिक वायरस कहते हैं। और यह कोरोना वायरस भी इसी टाइप का कोई वायरस है जिसने स्पीसीज जंप किया है किसी इंटरमीडिएट स्पीसीज के थ्रू। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वह इंटरमीडिएट स्पीसीज कौन सी है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो काफी फास्ट है। अगर हम सार्स और मर्स, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2 वायरस ऑलरेडी फैल चुके हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका जो फैलने की स्पीड है वो काफी तेज है। इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड अभी ग्लोबलाइज्ड है और एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कनेक्शन, इसलिए जब ये फैलना शुरू हुआ तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू स्टॉप इट स्प्रेड एंड कंटेन इट। राइट नाउ the first step what governments taken was lockdown, but lockdown is not the solution actually, because you cannot lock the whole entire population of this world for infinite time. So COVID-19 is the name of the disease and SARS-CoV-2 is the name of the virus which causes this disease, and 2 indicates that it is also a SARS-CoV virus, coronavirus, but it's version 2, like it was unknown previously. So this is the transmission electron micrograph of coronavirus, and you can see here that these viruses have the spikes on their surfaces, and these spikes actually matches similar to the crown. That's why they bear this name corona, and they spread through aerosol. That means when we
cough or sneeze, the water droplets from our mouth travels in the air and they fall on the surface, and that's how it spreads in the human to human. Now, this is the structure, and this structure is very, very crucial because the scientists generally study the structure and properties, and then they develop drugs to target one particular aspect so that they can kill or deactivate the virus. So, the most important feature of this virus, or this lipid bilayer, which is shown in gray color here. So, this is the lipid bilayer. It has a RNA. This RNA is within that envelope, and these proteins, they are glycoproteins, and these proteins are going to bind to the human cell so that it can infect the human being. So, what are the symptoms? Generally, in almost all the cases, fever is the common trait that everybody who is infected, they will show symptoms like fever, fatigue, dry cough. Like coughing is the significant symptom of this coronavirus. But still the different kind of symptoms are being recorded and being added to the symptom list, like loss of smell and taste has also been added as a symptom for the coronavirus. Previously it was not. So still the study is ongoing, and various kind of symptoms are being added to the list. But fever and cough is the clear-cut indicator if someone is having a corona infection. Now, what is the problem? The disease is spreading very fast, and you cannot develop a drug because drug development takes at least 10 years minimum. So it is not possible that a disease comes and you develop a drug within like a month. It is almost impossible because for a drug development you have to go stage by stage. First you have to identify the target, like suppose a disease is spread by a virus, then you target the virus, like which feature is you are going to target, and according to that you will design a molecule. Then you screen that molecule, like suppose 10,000, 50,000 molecules you have selected. Out of that, few potent molecules you will have to select. Then you have to study for at least 1 year in vitro, like in the glass or petri dish in the lab, then in the mouse. Then you have to start human trial, first small batch, then larger, then larger. It takes almost 7 to 8 years for the clinical trial. Then you have to go for the review process and acceptance and approval. Then this drug will come into the market. So this is not the option right now because the disease is spreading very fast and we need cure right now. Already it has been like 7 months, and people are struggling to cope with the consequences of this disease. But it is new drug development is not possible. So what is possible is repurposing of drugs. What does it mean? Means like drugs have already been discovered for some other application or some other treatment of some other disease. Now we trying to use those drugs to treat corona patients. That means we are repurposing the drug. They have been discovered for some other purpose, but right now we are using them for treating corona patients. What is the idea behind it? There are 4 criteria for which we target for the drugs to work on. Stop the virus from making copies, like replication. We are targeting replication so that virus cannot make itself again and again. So the numbers cannot increase. If a virus is surviving on some protein, then we can block the synthesis of that particular protein, so the virus will be deactivated. Another thing is like the way virus enters the cell, we can block that pathway, so the virus cannot enter into the cell, so its transmission and infection gets stopped. And final thing is dismantle the virus structure from within. That means you disintegrate the virus. So all these drugs, they will try to target one of these criteria to cure the patient. Now, what measures we have taken to stop at least the spread, not the disease, but the spread? First,
every government in the world, including the Indian government, they have adopted social distancing. Everyone almost right now is following this social distancing. We are involved in this webinar. It is the consequence of social distancing because we are now connected through technology. We are together but not physically. Lockdown and stay at home orders also have been implemented to stop the spread. Travel ban, because previously it was like global world is a global village and everything. Now every air travel has stopped and now people cannot travel to other countries unless it is emergency. And the objective of these measures is flatten the curve. This word has been used many a time. What does it mean is like जैसे कि सपोज विद इन लाइक एक महीने में सपोज हमारे पास 1 लाख पेशेंट आते हैं और उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर 1 लाख या उससे कम पेशेंट आए. अगर हमारे पास सपोज करिए 1 महीने में अगर 1 लाख पेशेंट ट्रीट करने की कैपेसिटी और 1 करोड़ पेशेंट आ जाए तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट ट्रीट देम. तो अभी इसी कर्व को हम फ्लैट करना चाह रहे हैं कि हमारा ये टारगेट नहीं है कि कोई भी पेशेंट आए ही ना. टारगेट ये है इंडियन गवर्नमेंट का कि पेशेंट आते रहें लेकिन जितने आए उतने ट्रीट होके जाते रहें, तो वो जो कर्व रहेगा वो फ्लैट रहेगा, पीक नहीं आएगी, जिसकी वजह से उनको ट्रीट करना इजी रहेगा. और ये जो टाइम हमको मिलेगा उस टाइम फ्रेम में हम जितने भी कैंडिडेट ड्रग्स हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं. और जो केमिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं उनके पास ये टाइम वो अपने पास सेव कर पाएंगे कि उस टाइम पीरियड में वो बहुत सारी दवाई की नई नई सिंथेसिस डेवलप कर सके ताकि वो इजिली सिंथेसाइज की जा सके, ताकि उनकी प्राइस कम की जा सके. और इन सब मेजर्स जो लगाए गए इनका कॉन्सिक्वेंस है, दे आर नॉट देयर विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस. जैसे हमने एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी देखी है लार्ज स्केल, जहाँ पे हमारे माइग्रेंट लेबर्स वर माइग्रेटिंग फ्रॉम big cities to their houses. They were also taking the virus with them to the rural areas. तो इकोनॉमिक रिपरकशंस तो है ही वर्ल्ड वाइड. उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आइसोलेशन की वजह से मेंटल स्ट्रेस और एक आइसोलेशन का जो डिप्रेशन काज होता है, जो बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है. तो जो लोअर सेगमेंट है इकोनॉमिक स्ट्राटा है उनके लिए फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज हो गई है, जिसको गवर्नमेंट काफी हद तक इट इज ट्राइंग टू एड्रेस इट. और हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो क्राइसिस में है क्योंकि वो ओवर स्ट्रेस्ड है. डॉक्टर्स आर नॉट गेटिंग टाइम टू टेक रेस्ट, nurses are not getting time to take rest. Even when this virus came into India, even the sanitizers and masks were not available. So health sector and the pharmaceutical industry is really in great demand. Now coming to the research, how the chemist and biochemist, material chemist are coping with finding out the solutions for caring the patient. So American Chemical Society has published an open access article last month, and here they have compiled all the drugs and therapeutic agents and vaccines which are under trial, and this is the typical research. As soon as you go to the Science Direct and just put COVID-19, and you will end up getting 15,000 papers immediately within like 1 second. And these papers have been published in 2020, like in December, the coronavirus was reported. Immediately, chemists and scientists started working for the treatment and for studying the coronavirus so that they can model it properly, so that the drug can be investigated more efficiently. So 15,000 papers have been published. If you search it in Google Scholar, you will end up getting 50,000 or more papers. That means scientists worldwide are working and running from pillar to post to find a cure for this particular disease. But till now, not a single compound has been found which exclusively can be used for treatment of this coronavirus. This is the PAS of American Chemical Society, and here they have listed 50,000 compounds which have potential antiviral
activity. And what they are trying to do is they are making a library of like 50,000 compounds so that the scientists and chemists worldwide can assess and know the name of those compound and they can try for the cure and clinical trial they can use these compounds. So they have made a library to make the life easy. Now WHO has also started a clinical trial which is named Solidarity. अभी इस सॉलिडारिटी क्लिनिकल ट्रायल में ऑलमोस्ट जितने कंट्रीज हैं जो WHO में पार्टिसिपेंट हैं वो सारे लोग क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट आने हैं वो काफी फास्ट आ रहे हैं ताकि बहुत सारी दवाइयों का एक साथ स्क्रीनिंग किया जा सकता है और एक एंड रिजल्ट पे हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली 4 जुलाई को WHO ने एक्सेप्ट किया है जो सॉलिडारिटी क्लिनिकल ट्रायल कमेटी की रिपोर्ट को जिसमें उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एक लोपिनावीर राइटोनावीर कॉम्बिनेशन थी दवा का उसका जो ट्रायल था उसको स्टॉप कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया है। हालांकि ट्रायल फेज में है बट अभी ह्यूमन ट्रायल इसका रोक दिया गया है क्योंकि कोई भी कन्विंसिंग रिजल्ट इससे नहीं आ रहा था। और आपको पता होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि इट इज ए मैजिक ड्रग एंड यू हैव टू सेंड इट टू अमेरिका। बट राइट नाउ the solidarity clinical trial is proving it that hydroxychloroquine is not safe to use, but it can be used for severely infected patients where there is no other option. So, in Indian scenario, if we see that CDRI जो हमारे लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे ही हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, they have already started, they have already synthesized they have discovered new method of synthesis of the drugs and they have already given the method to Cipla and Glenmark, and these companies are making these medicines on large scale so that they can reach to all over India. तो अब जैसे यहाँ पे आप इंडियन गवर्नमेंट ने सिप्ला, ग्लेनमार्क और हेड्रो इन तीनों कंपनियों को उन्होंने परमिशन दे दिया है कि वो सिप्रेनी, थाइलेफ्लू और कोविफोर इन तीनों दवाइयों का वो प्रोडक्शन करें और उनको सप्लाई करें। और ये जो सिप्रेनी है ये ब्रांड नेम है, इसके अंदर जो इसका जेनेरिक फार्मूला है वो रेमडेसिविर है और रेमडेसिविर यहाँ पे आप देख सकते हैं रेमडेसिविर और यूमिफेनोविर, इसको IICT हैदराबाद में सिंथेसाइज किया है अपनी लैब में और उस सिंथेटिक मेथड को उन्होंने इस सिप्ला कंपनी को दिया है ताकि वो अपने यहाँ पे इस दवा को लार्ज स्केल में बना सकें ताकि पूरी पॉपुलेशन को ये दवाइयाँ रीच की जा सके। अभी फैविपिराविर को भी बना दिया है IICT ने, उसका भी मेथड डिवाइस कर दिया है, उसको भी सिप्ला को उन्होंने लाइसेंस कर दिया है, परमिशन दे दिया है कि वो उस दवा को बना के दे सकते हैं। अब ये जितनी भी दवाइयाँ हैं जैसे फैविपिराविर है ये ऐसी नहीं है कि दिस इज द न्यू ड्रग, इट इज नॉट, this has been already used in Japan for the treatment of some other patients. This is an antiviral drug. Now the scientists are trying to use various antiviral drugs for the treatment of COVID-19 patients. तो ये जापान में ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है कि आप इस दवा को, लेकिन आपको जैसे पता है कि इंडियन पॉपुलेशन के पास इतने पैसे नहीं है कि आप बहुत ही कॉस्टली दवा को लॉन्च कर दे तो वो इलाज नहीं करा पाएगी ज्यादातर पॉपुलेशन। तो इसीलिए जो केमिस्ट है दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू सिंथेटिक मेथड जो कि लोकली अवेलेबल केमिकल्स से बनाए जा सके ताकि उनकी जो कास्ट हो वो कम हो जाए, ताकि जो हमारी इकोनॉमिकली वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको भी वो दवा इजीली पहुंच सके। Now this is the chemical structure of remdesivir. This is the most important drug right now because of its potent application for the treatment of COVID-19. और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे और ये स्ट्रक्चर है आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो हमारा DNA का एक सेगमेंट है, ये एडेनिन मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अगर इसके साथ हम कंपैरिजन करें तो रेमडेसिविर का स्ट्रक्चर जो है वो काफी कुछ मिलता जुलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को हम कॉपी करते हैं कोई भी दवा बनाने के लिए और स्ट्रक्चरल फीचर्स को हम रखते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चरल फीचर्स के बेस पे वो किसी भी वायरस को टारगेट करता है। तो ये रेमडेसिविर इस समय सबसे ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल में है और
इसका अफेक्ट क्या है कि ये लीवर को अफेक्ट कर रही है अभी, तो इसलिए और हमें सेफर मेडिसिन की तलाश है। डेक्सामेथासोन को भी इस समय मिल चुका है इसके ट्रायल का परमिशन। तो डेक्सामेथासोन भी एक कॉर्टिसोल जो स्टेरॉइड होते हैं, आपको पता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल या जितने भी हार्मोन्स हैं उनके साथ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, और इस ड्रग का भी काफी अच्छा इसका एप्लीकेशन है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी में हो गया कि जब भी हमारी बॉडी इन्फेक्ट होती है, हमको जो फीवर आता है, फीवर इसलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इट इज ट्राइंग टू फाइट ऑफ दैट इन्फेक्शन, और इसकी वजह से हमको फीवर आता है। कोरोना वायरस के केस में क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर ड्राइव में चला जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा फीवर होने लगता है, और वो ओवर ड्राइव में जाने की वजह से ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है। तो डेक्सामेथासोन क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा जो इन्फ्लेमेशन है उसको सप्रेस कर देता है, ताकि आपका इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो हो जाए, तो फीवर आपका थोड़ा कम हो जाए और धीरे धीरे आप कोरोना वायरस को खुद से ट्रीट कर ले जाए बॉडी। ये डेक्सामेथासोन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की भी आप सिमिलरिटी देखिए, जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट है कॉर्टिसोल, उसके साथ कितना हद तक ये सिमिलर है। और ये दवा यहाँ पर बस फ्लोरो डेरिवेटिव लगाया गया है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाया गया है, और नेचुरल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ट्वीकिंग करते हैं थोड़ा सा, here and there we will change the natural product to increase its potency for treatment of the drug। ये भी ऑलरेडी जितना भी हमारा मसल पेन या ज्वाइंट पेन होता है उसके लिए ये दवा ऑलरेडी हमारी यूज में थी। अभी इसको हम ट्रायल स्टेज में है इंडियन गवर्नमेंट के कि इस दवा को भी यूज किया जाए डेक्सामेथासोन को भी ट्रीटमेंट के लिए। एक और दवा है आइटोलिजुमैब, जिसको बायोकॉन ने लॉन्च किया है, और इसको उन्होंने इंडियन ड्रग रेगुलेटर है बायोकॉन, उनसे परमिशन इन्होंने डीसीजीआई जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनसे परमिशन इन्होंने ले लिया है बायोकॉन ने, और इन्होंने जो अपने इनका R&D डिवीजन है वहाँ पे इसकी काफी इंकरेजिंग रिजल्ट मिला है। एक फाइनल ड्रग है जिसको भी IICT ने बनाया है, फेविपिराविर, इसका भी काफी इंकरेजिंग रिजल्ट है। फेविपिराविर का भी ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा था, ग्लेनमार्क इसको करने जा रही है। इसकी भी सिंथेसिस को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने काफी लोकली अवेलेबल मटेरियल से इसकी सिंथेसिस कर ली है, और अगर मार्केट में लॉन्च होती है तो ड्रग की प्राइस काफी घट के आएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है, जो ब्रांड नेम है ग्लेनमार्क का, ये स्ट्रक्चर है जो पायराजीन कार्बोक्सिमाइड डेरिवेटिव के ऊपर है, और ये दवा भी ऑलरेडी जापान में डेवलप की जा चुकी थी 2014 में, लेकिन अभी IICT ने इसको दूसरे मेथड से बनाया है, और ये मार्केट में बिल्कुल अगर ट्रायल इसका सक्सेसफुल रहता है तो। अदर ड्रग्स, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में मैंने आपको बताया ही, WHO ने इसका ट्रायल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया सोलिडारिटी क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत, बट अभी भी अदर ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन इसका यूज किया जा रहा है सीवियरली सिक पेशेंट्स के अंदर, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो इवन छोटे बच्चों को भी दिया जाता है जब उनको जुकाम हो जाता है और फीवर चलता है। तो एजिथ्रोमाइसिन का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक एंटी मलेरियल ड्रग है वो भी एंटीवायरल ही है, और ये एंटीबायोटिक इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी दिया जा रहा है, और इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं इसका कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप अगर इसको देते हैं तो पेशेंट्स की हालत थोड़ी सी इम्प्रूव होती है अगर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लोपिनावीर और राइटोनावीर, इसका भी क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और कोई इंकरेजिंग रिजल्ट नहीं मिला है, और इसका ट्रायल डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो बायोकेमिस्ट और जो केमिस्ट है दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अभी इंडियन गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इस दवा को, जो ये भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, इसको भी उन्होंने परमिशन दे दिया है इसके भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन इंडिया में, क्योंकि चाइना और USA में इसके लिए भी काफी अच्छे रिजल्ट थे। तो यहाँ पे दो इंडस्ट्रीज हैं, ये जैसे आइटोलिजुमैब है जिसको बायोकॉन को परमिशन मिला है, जो कि सिरोसिस के लिए ऑलरेडी यूज की जाती थी। ऐसे ही टोक्सिलाजुमैब है जिसको रोज प्रोडक्ट को परमिशन मिला है इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट के लिए, सिप्ला को। एक ये नई ड्रग है, इसको इमोरी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है इमोरी, टॉप 50 रैंक में यूनिवर्सिटी आती है, और उन्होंने एक नया कंपाउंड डेवलप किया है जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में काफी यूजफुल था, तो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल करना शुरू कर दिया, और ये फेज 2 ट्रायल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है ये दवा, फेज 2 ट्रायल में है।
और ये काफी पोटेंसी रख रही है। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी जो हमारे डीएनए का सीक्वेंस होता है सिटिजीन, जो सिटिजीन होता है साइटोसिन और आपका जो ग्लूकोज रेजिड्यू है उसका जो कॉम्बिनेशन है जिसको हम सीएमटी भी कहते हैं, सिटिजीन मोनोफॉस्फेट, अगर यहाँ पे फॉस्फेट रहता है उसका ही एनालॉग है। और ये भी काफी इम्प्रूवमेंट ला रहा है सांस और मस के। हेलो, थोड़ा कंक्लूजन निकालिए। ओपीडी से डॉक्टर आया है, ठीक वो कर पेशेंट्स में और कोविड-19 के डिजीज का ट्रीटमेंट। हेलो, am I audible? yes sir, you are audible sir. ओके। सो जब तक हमारे पास कोई दवा नहीं आ जाती है तब तक हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है साबुन से हाथ धोने का, जिसको गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है कि वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड। अभी सोप के साथ वॉशिंग से हमें फाइनली होता क्या है, सोप में सोप मॉलिक्यूल्स एम्प्लीफाइड होते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो पार्ट होते हैं, एक वाटर लविंग होता है और एक फैट लविंग होता है। और हमारा जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो टॉप लेयर होता है, ये जो टॉप लेयर होता है जो यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा है, ये लिपिड का बना होता है। लिपिड जैसे एक फैट होता है उस तरीके से होता है। तो जब सोप मॉलिक्यूल वहां पे आता है तो सोप मॉलिक्यूल में चूंकि दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक, तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो इस लिपिड लेयर में धंस जाता है और ये हाइड्रोफोबिक जो लेयर होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। और जब साबुन के बाद हाथ धोते हैं तो इस वजह से ये लेके अपने आप को वाटर में जाना चाहता है, और साथ में क्योंकि ये लिपिड से अटैच है वायरस के, तो इस वायरस को ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है और वायरस पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो अभी के लिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर दिस डिजीज, और washing hand is one of the option, or this is the chemistry of soap by which it can kill the virus. Similarly, alcohol based products can also be used, which also acts in a similar manner. So finally, thank you for your patience. Thank you so much, Thank you so much, Jitendra, for valuable information about the war against corona and how chemistry how would chemistry help for this. would help for this. हमारे बीच में हमारे बीच में हमारे बहुत बड़े इवेंट सबसे बड़े स्पीकर हमारे साथ मैं आमंत्रित हूँ डॉक्टर जेके जैन सर को, जो कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट है सिविल हॉस्पिटल बैरागढ़ भोपाल से। डॉक्टर जैन सर, ओवर टू यू। जय सर। ओके ओके जी सर। जैन सर थोड़े से ओपीडी में व्यस्त हैं अभी अपने, फिर से वो 22 मिनट में हमको ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे बीच में एक और हेल्थ स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर जैन साहब, जैन साहब सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, चलिए आप अपना लेक्चर दीजिए सर। डॉक्टर जैन साहब, आपका स्वागत है। चलिए, thank you very much. First of all, I will like to thanks everybody, and I will say namaste to all guests and dignitaries which is present there. My topic of today is impact of COVID-19 on health. First of all, I will present this topic under few headings. These headings are introduction, clinical features of COVID-19, impact on physical health, impact on mental health, diagnosis and treatment, preventive measures, and take
form message. First heading is introduction. As we all know that health is the state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. And so, as the corona, we know that corona is a family of viruses which is affecting the respiratory tract, causing disease from common cold to the pneumonia. And these coronaviruses, they usually live in the bats and other wild animals and transmitted to human directly from the animals or by other animals. The spread of this virus can also occur between the humans through the respiratory droplet infection. As all of us know that this COVID-19 disease started from the China, and China reported WHO on 31st December 2019 that several pneumonia cases are occurring in their Wuhan city of Hubei province. And later the WHO declared it as COVID viral disease on February 11, 2020 as a pandemic disease. Now comes the clinical features of the disease. We know that this virus is a very contagious virus and spreads very fast. So mainstay of the treatment is also there is prevention. So when this virus, the mode of entry of this virus is mainly from the either from the nose, nostrils or mouth or through the eyes. So when they enter through these routes, they attach themselves to the mucosa and to the cells and then replicate there. So when they reach in sufficient quantity, then the symptoms will appear. Then from the entry of virus to the symptoms to appear, it may take about 2 to 14 days. The main symptoms and early symptoms are fever or high-grade fever. Then comes the body ache and dry cough and headaches, and there may be conjunctivitis or there may be discoloration of fingers, thumbs. But the serious symptoms are difficulty in breathing, or there may be pain in chest or pressure on the chest, or there may be some neurological deficit or loss of consciousness. If some sort of shortness of breath or some difficulty in breathing is there, one should immediately take the help of doctor and get admitted in the COVID care centers. Next comes the impact on the physical health. As all of us know that this coronavirus is mainly affecting the respiratory tract. So when it affects the upper respiratory tract, it leads to sore throat or it may lead to pharyngitis. But when it descends down and reaches to lungs, it may produce bilateral pneumonia. And when this affects the lungs, the pneumonia, then the difficulty in breathing started in early stage. Second organ which can be affected is the heart and blood vessels. When it affects the heart, it may lead to irregular heartbeats and lowering of blood pressure. That may lead to sudden cardiac arrest and death due to heart failure. It may also increases the clotting of blood inside the blood vessels, and due to this easy clotting of the blood in the blood vessels, patient may undergo severe strokes and heart attack. The liver and kidney cells are also inflamed in this case, and liver and kidney damage may also occur. As we know, this virus produces the immense inflammatory response inside the body, and when virus attacks in large amount to the body, it causes intense inflammatory response and releases a lot of cytokinins and leads to cytokinin storm. And this cytokinin storm can disturb the functions of multiple organs of our body and can lead to sepsis syndrome and death due to multiple organ failure. Besides this, there may be some neurological complications, and we should know that these virus, there are certain population in our community which are more, they are prone for this infection from this virus. These are the persons who are having pre-existing uncontrolled hypertension or diabetes mellitus 2, or they are having cardiovascular diseases, or those who are under immunosuppressive therapy for any renal transplant or organ transplant or any other autoimmune disease, or those cancer patients who are under chemotherapy. They are at high risk. Besides, the impact on mental health, as we know that this disease is mainly
for this disease, and we have to rely on our isolation and social distancing and this and lockdown. These are things which has been done in the beginning. They may lead to the loneliness of to the person, and due to loneliness, the person of this social distancing, lockdown, and due to the stigmas which are there in our society, which leads to the social boycott or other thing of the person who are affected by this illness, that can also lead to the mental illness. Mostly these mental illness in the initial phase, they may be in the form of boredom, or they may be in the form of some mood disturbances, but they may increase if the society does not cooperate or does not behave properly with the persons, or in that case it may exaggerate into the either anxiety or depression, or if the person living in the vicinity of the heavy COVID patient, if they do not support or they do the social boycott, then these persons, they may undergo much more trouble. Along with this, there may be exacerbation of any pre-existing mental illnesses. If the person is so we have to take care of those persons much more efficiently, those who are having previous mental illnesses. So in these early stages, we must be try to recognize early stages of stress, depression, and anxiety, so that they cannot transform into the in severe form, and the help should be given either by the family and friends which are near about, or if they are not able to control it, then they should contact with the professionals and take help of the professionals. Along with this, the neuropsychotic sequel of viral infection, there may be delirium. Due to pandemic of COVID-19, there are increase in suicidal tendency of the persons. Social stigma and domestic violence are also emerging issues. Special attention should be given to the vulnerable population of this our country. These include the child and adolescent, because the child, they do not in this lockdown and social distancing, they do not have the facility to for the outdoor games, and so the parents must play a great role. They should arrange for some recreation inside the home, and also some physical exercise inside the home, or pranayama and yoga, and so that the children, they have recreation as well as they should strengthen their respiratory system. Along with them, the elderly and disabled populations, as they are much feared of the corona diseases, so they should be given a special attention, and their care should be taken. The pregnant women, they also have the tension in their mind for their unborn child, that this disease may not affect them, or through them their children may not develop any congenital anomalies or other things. So their counseling, and they should be assured that if they do not get any disease or by prevention, they can protect themselves and their children. Similarly, the lactating mothers, they should be assured that if they are not having any problem, that they can easily feed their child also. Then comes the diagnosis and treatment of this disease. We know that for confirmation of diagnosis, there are two tests. One is the real-time PCR test, in which the throat swab is taken either from the nasopharynx or oropharynx, and that is tested for the virus, and in 24 to 48 hours, whether it is positive or negative, the result may come. Second test are ELISA test, in which the presence of antibodies in the blood is detected, and this will indicate that they have previously they have suffered from viral infection, and due to that the body has developed antibodies in that. And such patients now used for the plasma therapy also. But before starting plasma therapy, their test of RT-PCR should be done, so that they are now virus negative. Now treatment, we all know that at this stage also,
treatment options are very limited. Only the preventive measures are the mainstay of the treatment. So one should be take all the preventive measures to keep themselves healthy. And the main thing which we can do is the in preventive measures to prevent the infection. We should wash our hand with the water and soap and sanitizer for at least 20 seconds. We should avoid the contact with sick people. We should do not touch eyes, nose or mouth with unwashed hands. We should wear a mask whenever we go outside our home, and we should not take raw food. We should take thoroughly cooked meat and eggs and other things which are if we are taking. And we should avoid contact with animals and animal products. Along with this, supportive and symptomatic treatment is practiced. Those persons who are positive but they are not having their SpO2 is blood oxygen level is more than 95%, or who are having simple fever or sore throat, they can take they can consult in cold clinic, and where they are giving symptomatic treatment of paracetamol or azithromycin, and they will get cured. But those persons who are having difficulty in breathing or having a very high fever, they should be admitted. And even in the admitted patient, the treatment is mainly given by either steroids or some antiviral drugs like lopinavir and ritonavir. Those patients who need respiratory support, in those cases, oxygen or even ventilate, they are put on the ventilators. For severe cases, plasma therapy by plasmapheresis is given. Hydroxychloroquine is given to the frontline health professional as a prophylactic treatment. We all know that a lot of research is going on the vaccines. So vaccines are still awaited. Now, those persons who are infected and having only mild symptoms, they should isolate themselves and should remain at home. They should avoid contact with others. They should cover their nose and mouth when sneezing, and they should keep the object surface clean, and they should always wear a surgical mask. Besides this, the preventive measures which can be taken to boost the physical health. One of them is one should take a healthy, balanced diet so that they remain fit. Along with them, they should take multivitamin, vitamin C, and vitamin A. They should also have some exposure for 15 to 20 minutes, and they can take vitamin D for their further health. Adequate water intake must be ensured so that they should not remain dehydrated. Adequate exercises involving pranayama should be done for strengthening the respiratory system. So, preventive measures should be taken to boost the mental health. We should practice social distancing, but we should not practice the loneliness. We should adapt to the changes which are taking place in the society and in our day-to-day routine practice with smoothness. Otherwise, we will become segregated and we feel loneliness. For this, we should remain connected with our relatives and our friends either through mobile or we should use online platform to stay connected. We should also do regular physical activity so that feel-good hormones like endorphins, they are released and they will help in mood regulations. Other things which we can do is we can use relaxation techniques. We can learn new skills so that we spend our time in them. We can practice music or we can do yoga regularly. That will help in our keeping ourselves fit as well as keeping our mental health okay. We should follow a fixed routine so that we do not get bored early, or we should not get disturbed by the tasks of others. We should also maintain a sleep-wake cycle. Other than this, we should limit our screen time, because if we stick to the TV media and other things, then we will remain connected with the negative news also, and they will also have a negative impact on our mental health. And we should also stay away from the fake news. We should also adopt work from home concept, because this work from home concept not only gives the mental satisfaction, but it also helps in improving the economic condition of the person itself. And in spite of all these measures, if we are unable to have our mental health okay, or we are feeling depressed and in anxiety, then we should take the help of professionals.
For the professional help, the NIMHANS, which is the National Institute of Mental Health and Neurosciences, it has started its first ever helpline for the psychological support, and the person they can have the IVRS based telephone OPD services can be taken. The number of that is 08026991699. Besides this, in Chhattisgarh there is also helpline number from them which they can take the help for their if there any disturbance in their mental health. The number is 0771 282 113 0771 244 6607. Now, in the last I will say that the take-home message will be the prevention is the major stay of the treatment. Since the no definitive treatment is available, so prevention is the major stay of our treatment. We should be aware of mental health impact of COVID-19 as well as physical impact of COVID-19, and we should help ourselves and to our neighbor if any problem arises. And special care should be done for the risk population, just like I have said, adolescent person, elderly person, and pregnant and lactating women. And in spite of this, if there is any problem, we should take professional help for both physical health and mental health when necessary. Okay, thank you very much. If there is any question, I can answer. Namaste, Uncle. I would really ask a question that what is convalescent plasma therapy, and at which stage the treatment is done for? Convalescent plasma therapy is done from the patients which have recovered from the COVID-19 disease. So in their plasma there are antibodies are present against the coronaviruses. But it is done only for those patients who does not respond to our conventional treatment or who are very sick, like they are having a lot of respiratory problem and toxemia which is not improved by available drugs. It is not for all the persons, and it is not done in this way because we have to first test to the person who are giving their plasma that they are virus free and they are fit to give the plasma for donation. Thank you, Uncle. Okay. और किसी क्वेरी है आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू जैन साहब, आपने जो समय दिया हमारे लिए, आभारी रहेंगे. थैंक यू सर. नहीं है. थैंक यू डियर. ओके बाय. थैंक यू सर. हमारे बीच में अभी उपस्थित जिन्होंने हेल्थ केयर मेडिकेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोविड-19 के बारे में काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी. लेक्चर की सीरीज में हमारे बीच में एक और हेल्थ स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर जेपी साहू सर, एमडी है ओबेसिटी एंड गायनेकोलॉजी के, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर. ओके, तो इनका डिस्कशन का एरिया है कोरोना वायरस एंड इट्स थेरेप्यूटिक्स. सो आई लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जेपी साहू सर. साहू सर. Thank you, sir. I would like to congratulate all the members of the Physical and Chemistry Department, Ambikapur, especially our principal, S.K. Tripathi sir, the Sinha, S.K. Sinha sir, and the HOD Saroj ma'am. They given the opportunity to speak me on that coronavirus and its therapeutic. Yes, sir. My voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, audible? This is the coronavirus. What is the coronavirus?
coronavirus is an RNA virus family known to ranges of disease from common cold to that of the severe pneumonia. What is novel coronavirus? Previously, there is a coronavirus which is not infected of the human being, but the new coronavirus which is known as the COVID-19, which is to infect the human being. This is the virus firstly seen in China, which is called as COVID-19. Other known type of virus which include the MERS coronavirus and the SARS coronavirus. What is the current situation in that of the new coronavirus? The first case of coronavirus was to be discovered in that December 31st in 2019 in one city of the China. In the January 28 January 2020, more than 6,000 cases have been reported in China. Then it is to be spread in that all over the country. In that South Korea, Hong Kong, Mexico, Vietnam, Nepal, and they are almost all over the country. It is present in that all over the country. Can human be infected from the coronavirus from an animal source? This is the new coronavirus is to be spread disease from the source of the animal. This source has to be like animal carriers from that which are to be proven in China from that cats and the snakes. Which is the animal source it is to be hypothesized. Are still under study and have not been proven or to be denied. What are the symptoms of the new coronavirus? This is the most common symptoms of the new coronavirus: fever, cold, cough, shortness of the breath, and difficulty in breathing. In the most cases, infection can cause the pneumonia, severe acute respiratory distress syndrome, renal failure, and even death. Then the new coronavirus can be transmitted from one person to another person. Yes. The new coronavirus is transmitted from the one person to another person. They are contact with that. They are exposed to that. Infected person or the contact of the family, workplaces or in the healthcare sector. For example, also exposure to surface contamination, which we are to be such in that way, where the infected person are not in that area. Our healthcare workers are at the risk of contracting a new coronavirus. The health workers are more prone to that of the and the more highly risky that which were contact with that of coronavirus, so that they have to be infected and has high risk to that infection. लेकिन अब ये Is there a corona vaccine against the coronavirus? Is that there is no corona vaccine is to be developed? It is in the trial. बोले थे कि देखना है तो बड़ी सारा व्यवस्था करना घर से ही है कि नहीं, तो फिर मैं कहा कि नहीं ठीक ही हम लोग आ गए पर डिस्टर्बेंस घर से होता है बहुत होता है इसीलिए वरना भी कोई था ही नहीं मेरे पास पड़ गया ineffective against the new coronavirus because the virus belongs to a different family and not covered by the अच्छा हो गया बहुत बेहतरीन चल रहा है. If there is a cure for new coronavirus, there is no specific antiviral drug for the disease caused by the new coronavirus. How can many of the symptoms can be treated depending upon the present clinical condition. The supportive care for the people infected can be very effective. The report of the success of treatment for some cases using nature or in fact the drug can be proven effective in the treatment of other non-viral disease and used to treat the emerging virus for medical purpose, but have not yet proven effective and the evidence extensive studies in this research. इससे वास्तव से तो देख रहा हूँ वो भी जुड़े हैं लोग सड़क पर चल रहे हैं तो अपना लेके चल रहे हैं. To reduce the risk and prevent the new coronavirus infection, please apply to follow and avoid the direct contact with animals, live or dead, or present in animal trade market in our outbreak countries. Avoid direct contact with the animal with symptoms of cold and respiratory infection. Cover your nose, mouth when sneezing, perfumes, which are सब्जेक्ट वर्क भी दे सकते हैं. wash your hands जैसे कि with अगर soap कोई and जानने water करके तो इसके and में क्या use a बोलेंगे coherent hand wrap. And make sure that animal products are cooked well before दुनिया that का भी they बहुत are अच्छा पॉलिटिशियन are privileged to area where coronavirus has been appeared.
following the पहले above बताओ एक ब्रेकअप हो precautions. गया In था उससे addition, 22 stay at हाँ home and avoid the crowded places to हाँ as much as हाँ possible using masks when you are going to crowded अच्छा place, and go to the nearest healthcare institution after the अब क्या है checking ना of कभी that कभी infected टाइपिंग में गूगल area, में वो and in the cases of the symptoms are mentioned हाँ above. हाँ Are those coming from the people from that of the China, they should be checked with the airport clinic and nearest health center with the technical ये indication जबरदस्ती है and the सही date में of travel, and those who हाँ are अपना नहीं contacted देखते them, हैं and kindly fill the disease form in Google form. हाँ सही And सबसे there अच्छा travel restrictions on the China and other हाँ areas where the सही जी जी coronavirus has been appeared. Yes, हाँ in the view of evolving outbreak in the people Republic of China बहुत सारे and based on the कंसल्टेंट्स हैं review सर of आपके the है कि नहीं assessment, it is advisable not to travel बताइए the China and other एक आध countries बार और where the करिए is absolutely necessary. Always जी the सर update if it becomes available हम्म when you are to confirm that एक all आध the बार flights and the bus stations are restricted from the area where they are एक आध बार सर from the infected area. Current management strategy. Most of the patients develop mild to uncomplicated disease. 40% of the patients develop the severe disease requiring hospitalization, in which 5% patient requires admission in ICU. No finally verified drug सब जो है specific to सब COVID-19 is जितने available सब at जो है present. No vaccine is currently available. Only preventive measures इससे of the सब हो supreme importance, like the hand washing, कई respiratory लोग जो है हम hygiene, लोग environmental cleaning, limitation on अभी the movement सही around कॉलेज वाले and सर from हम the लोग का बहुत चीज houses. रेप्लिकेट किए हैं सही कॉलेज Who are the virus person? Who are the बहुत virus कुछ person? रेप्लिकेट They किए हम like लोग that of के the age more than 60 years, diabetes, associated हम with लोग तो lung पूरा disease, रेप्लिकेट सब कर रहे हैं hypertension, renal failure, and immunocompromised patients. हाँ हाँ Clinical syndrome associated with COVID-19 disease ranges from that of the mild illness to severe pneumonia and even death. Like the mild symptoms, severe pneumonia, acute इसीलिए respiratory इसीलिए distress गड़बड़ हो syndrome, उनको septic हिस्टोरिकल shock, जो and लोग हैं investigate all the कुछ न कुछ patients ऐसा who सब have बुझा that था renal, अपना hepatic, टेक्निकल or सब्जेक्ट cardiac से रिलेटेड insufficiency. COVID mild कंप्यूटर एडमिशन में illness सब कुछ is अपने the symptoms सब्जेक्ट से of लिया था तो बहुत fever, ही अच्छा cough, हुआ उसका sore भी throat, nasal congestion, malaise, headache. But patients usually do not have any sign of dehydration, sepsis, or shortness of breath. Patients present with atypical symptoms like anosmia, altered taste, कल शाम को anosmia, मैं फिर and उनको even लिंक भी दिया था इनको diarrhea. Mild illness, use this time, tested antipyretic and analgesic are given. In these cases, paracetamol or acetaminophen, 500 milligram TDS antibiotic can be given. Avoid the other NSAID like the aspirin or the ibuprofen. This causes adverse effect on that patient. Mild pneumonia, no sign of the severe pneumonia. Children may have shortness of breath and the cough. This is how can diagnose there is respiratory rest. If there is respiratory rest in more than 60 per minute in the less than 2 months of the age, and more than 50 per minute in the 2 to 11 months of the age, and more than 40 per minute in the children of 1 to 5 years of age, and the severe pneumonia. Severe pneumonia will have the features, the clinical feature, this is the adult, this is the fever, the severe respiratory distress, and the respiratory rate SpO2 means oxygen saturation less than 90% and respiration rate in more than 30 per minute. These children are symptoms of in the severe pneumonia disease, respiratory destruction of the chest, inability to drink or feed, breastfeed, lethargy, central sinus, बहुत अच्छा जी convulsion, बहुत and ही sometimes अच्छा they unconsciousness. This test will be started once you start the oxygen therapy. Movement at the hypoxia is to be out of नहीं बहुत ही अच्छा प्रेजेंट था initiate oxygen therapy. जो This is the रिलेटेड किए हैं कोरोना per डिजीज minute to से reach the SpO2 more than 90%, and in जी the जी जी non-pregnant women and in the pregnant women to अच्छा more than 92 to 95%. Children with emergency sign, there is the target oxygen SpO2 is to more than 90% and receive the oxygen. Oxygen therapy should be given with the patient who has developed to hypoxic respiratory distress, and that high flow nasal catheter oxygenation and non-invasive ventilation to be given. In the patient with hemodynamic instability, multi-organ failure, abnormal mental status, high flow nasal oxygen and the NIV should be considered.
If no improvement in the 1 to 2 hours or worsening of the condition, endotracheal intubation and invasive ventilation to be given. If endotracheal intubation should be done by the trained person with the air stopped pre-oxygenation with the 100% oxygen flow for 5 minutes is required in the children, pregnant women and elderly patients because these are likely to desaturate during intubation. Mechanical ventilation using low tidal volume 4 to 8 ml per kilogram and the lower inspirative pressure, plateau pressure is less than 30 centimeter water is recommended. In the severe respiratory distress syndrome, patient turn to ventilate for that of the 12 to 16 hours per day recommended. In the pregnant women, this should be kept in the left and decubitus position. Mild sedation is preferred. Continuous infusion with the neuromuscular blockers. What is the fluid management? In that shock, the shock is persist. The crystallized shock to be given like that of the isotonic, normal saline, ringer lactate. Avoid hypotonic crystallized, avoid colloid like star, gelatin, and the elbow meal. Aggressive fluid resuscitation may worsen the oxygenation. Watch for fluid overload and overhead fluid management. How in adult isotonic crystallized in the 250 to 500 ml in the first 15 to 30 minutes. In the children, 20 ml per kilogram body weight in the first 20 to 60 minutes. Additional food may be considered as the requirement to achieve the perfusion target. In adult require 30 ml per kilogram body weight in the first 3 hours, then in the children may require more than 40 to 60 ml per kilogram body weight. But always look to the sign of the perfusion target. When RTA perfusion is to be more than 65 mmHg and the unit output in adults more than 0.5 ml per kilogram body weight per hour. Unit output in children more than 1 ml per kilogram per body weight per hour, and improvement in the clinical side and the biochemical parameters of the shock. In this facility to shock, then we will give the vasopressing agent to be normalized and then to a target of the blood pressure at that normal level. We are given the vasopressin like that of the noradrenaline, dopamine, vasopressin and adrenaline. In over 65 years of the age, mean arterial pressure 60 to 65 mmHg, target is equivalent to that of 65 mmHg. In the refractive patient, inotrope support with dobutamine, which is also the vasopressin and the cardiotonic have to be given when it is required. Empirical antibiotic, antimicrobial, it is started 1 year after identification of this. That says empirical antimicrobial therapy is selected on the basis of the clinical diagnosis, local epidemiology, susceptibility data, and the treatment guidelines. De-escalate or re-escalate the antimicrobial therapy and the availability of the microbiological report. Role of the corticosteroid in the treatment of the coronavirus patient in the severe cases is to be limited. It is because that there is no survival of benefit, and there is adverse replication and delayed viral clearance. In which condition corticosteroid are to be given. The patient is still hemodynamically unstable after use of the food and the vasopressor. Patient with progressive deterioration of oxygen indicator, rapid worsening or imaging or excessive activation of the body inflammatory response. We can give the corticosteroid injectively like the methylprednisolone 1 to 2 mg per kilogram body weight per day. Prednisolone is equivalent dose. It is to be given short dose therapy for about 3 to 5 days. In the pregnant woman, there is no evidence to the pregnant woman has a high risk infection, having atypical presentation of the illness. Pregnancy is increased seriousness of the illness. No evidence of the vertical transmission from the mother to that of the children in the antenatal or antepartum. No evidence currently to infection increased risk of miscarriage or second trimester loss. No evidence currently that virus has penetrated. In which there is no other systematic analysis
social distancing and limited studies if is possible. Multidisciplinary consultation may be needed. Breastfeeding. Benefit of breastfeeding is to be overweight that of the potential risk of transmission of the virus to the breast milk. All the confirmed or suspected COVID-19 infected patients and symptomatic or asymptomatic mother who are breastfeeding, practicing the skin to skin contact as a normal mother can avoid practice to enhance respiratory hygiene, avoid coughing and sneezing directly on that of the baby, and wear mask and had proper hand hygiene, hand washing before touching a baby, and environmental cleaning. In the case where breastfeeding is expressed is not possible, mothers should be given measures to infect applying IPC. What are the medications? The medicines are to be effective in that coronavirus infection. No expectancy and no specific antiviral drug which is to be taken on the coronavirus. Still it is the trial, but lot of drugs which are to be decreased severity are to be used and has a better result. Like that of the chloroquine and hydroxychloroquine, lopinavir, ritonavir, ribavirin, interferon alpha, conversion plasmocybin, arbidol, remdesivir, and flavivir recombinant human ACE2. Current therapies drug in treating of the coronavirus COVID-19 in the absence of definite and specific treatment regime strategies, including early diagnosis, treating promptly, isolation, and supportive treatment are important line of the treatment against COVID-19 infection. Currently, social practice including timely release of epidemic information and maintenance of the social order and personal practice also such as the prevalent personal hygiene, wearing facial covering and the mask, adequate rest and keeping to well ventilated. Hydroxychloroquine and chloroquine. This is a drug previously used in the malaria as well as that of the hepatitis, but they had some effect and that clearing, virus clearing and had effective against the COVID-19 infection. It is to be under the lysosomal reaction. This is the lopinavirus and ritonavir. This drug are used in the combination. Previously it is used. It is the drug of choice for that of the HIV-1 infection, which is a protease inhibitor. But it is effectively to some extent on the COVID-19 infection. Untitled Chapter. It is a derivative of the indole derivative. It is used in the developed from the Russia and the China. It is used in the influenza A and B virus infection. Flavipyramid has been developed in the physical chemicals in Japan on the treatment of the avian influenza and novel influenza resistance and neurotransmitter inhibitor. But it is also effective against that of the COVID-19 infections. Oseltamivir, Tamiflu. It is a drug used for that of the influenza A and B virus, but it is also used in that of the coronavirus infection. It is had to some extent to decrease the viral load and that of the infection. Supportive treatment. In the absence of the vaccine and specific antiviral drug for the coronavirus and the other SARS infection, many adjuvant therapies are used in supportive care for COVID-19 infection. The adjuvant therapy including antimicrobial like the azithromycin, ascorbic antioxidant, corticosteroid, and proteanol, tocilizumab, and silofovir, and canakinumab. Azithromycin. It is used for the respiratory infection. It is a bactericidal drug and has effective against the coronavirus. Vitamin C. Ascorbic acid is a nutrient and play important role within the human body. It can utilize the free radical analysis to prevent cellular damage as a per-accident agent. It is also involved in some biological process, many of which are associated with immune health. This means the vitamin C is to be immunity and immunity is to be sufficient in that against illness is to be fight against the viral infection like the coronavirus. Many studies shown that vitamin C positively affects the development and nutrition of the T lymphocyte, which is
it is a helper T lymphocyte and nuclear killer cell which has to be decreased and that had an immune response to against that viral agent. Niclosamide and ivermectin. Niclosamide and ivermectin is also effective against the treatment of the coronavirus. Niclosamide and ivermectin used in that anti-helminth, but it is too effective against the SARS and the other coronavirus. Use a hydroxychloroquine as a prophylaxis in the SARS-CoV-2. Indication in the asymptomatic health workers involved in the treatment suspected or the confirmed with COVID-19. Hydroxychloroquine is to be used as a dose of 400 mg twice a day for first day, then 400 mg daily for once a week for next 7 weeks. Next indication is the asymptomatic household conduct of laboratory confirmed cases. The hydroxychloroquine is to be used to the 400 mg twice a day and first day followed by 400 mg once a week for next 3 weeks. Tablet is to be taken only with meal. Hydroxychloroquine precaution and contraindication. Hydroxychloroquine should not be used for prophylaxis in the children less than 15 years of age in the patient with retinopathy, history of allergy to 4 immunoglobulins compound. Patients should be monitored to the common adverse effects like nausea, vomiting, diarrhea, skin irritation, anxiety, psychotic manifestation, neurological dysfunction, and peripheral neuropathy, conversion, and even hearing defect. There is increased risk of ventricular arrhythmias when the hydroxychloroquine is taken. It is also taken with the amiodarone or the moxicloxacin, which is the antibiotic. Monitor, ECG monitor is to be compulsory because there is a disturbance in the QT interval when it is also taken with the lopinavir and the ritonavir and azithromycin, which are used concurrently with hydroxychloroquine. Precautions are always to be taken when two drugs are given consequently. There is an increased risk of conversion when used with mefloquine. Mefloquine is an antimalarial drug, but this should be not given with this drug. Antacid. Antacid reduces the absorption of the hydroxychloroquine, so that the antacid is to be given to the interval of that about 4 hours. Means when antacid firstly given, then given the hydroxychloroquine. They are not given together. Most of the patients suffered with may adversely affect the outcome. No specific drug or vaccine is available for COVID-19 till date. Symptomatic and supportive treatment are mainstay in the severely ill patient and should be promptly instituted hospitalized. There should be needed individualized and therapy considered current patient consideration comorbidity. Preventive measures of the paramount importance in control of viral infection. So that we should be with the social distancing and that less mobilizing and not mobilizing area. So we have to don't play with your life, stay home and stay safe. Thank you, sir. All the organizing team and the Department of Chemistry and PG College, Ambikapur. Especially like to thank you, sir, SK Tripathi sir, SK Sinha sir, Roman, and all the organizing team members. ऑर्गेनाइजिंग टीम को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके डिस्कशन से निश्चित तौर पे हमारे पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी इस वायरस के थेरेपेटिक एस्पेक्ट के बारे में समझने में। कार्यक्रम के व्याख्यानों के श्रृंखला में अंतिम व्याख्यान के लिए मैं हमारे महाविद्यालय के IQAC सेल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डॉक्टर SK श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूं, जो कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर कंट्रोल ऑफ कोविड-19 के ऊपर अपना लेक्चर देंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव सर, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। हाँ, आ रही है सर। आज के इस वेबिनार में माननीय त्रिपाठी साहब, केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष माननीय तिलकी मैडम, संयोजक
डॉक्टर सिन्हा साहब, संदीप कुशवाहा जी और कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्री उमेश पांडे जी और सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी विद्युतजन और सभी इमिनेंट स्पीकर्स, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कोविड-19 के बारे में एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इस कोविड-19 और इसके इफेक्ट में। वैसे जहाँ तक वायरस का चीज है तो हमारे जो देश में है या जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तो सृष्टि के प्रारंभ के समय से ही इसका जो इलाज भी शुरू हो गया था और कोई समय समय पर ऐसी महामारियों का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त की ओर था और जब राजा परीक्षित ने सत्ता संभाला था और उसके बाद जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनाया जा रहा था, उसमें लिखा था कि कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो ये जो भारतवर्ष में जो है समय समय पर रोग महामारी का जिक्र किया गया था, शास्त्रों में भी जिक्र है और उस समय उसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन इस टाइप से चर्चा नहीं था जैसे आज हम वैक्सीन के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उस इलाज था वो मंत्रों के द्वारा किया जाता था। उनका सब तो इस प्रकार से रोग और महामारी को दूर भगाने के लिए हमारे शास्त्रों में भी मंत्रों का उपयोग किया गया। और वायरस की जो व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने मानस में लिखते हैं कि पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करे करे बिना, आनंद बिना सकल रस भोगी, और बिन बाणी वक्ता बनी। तो ये जो वायरस है जिसको कोई नहीं देख रहा, फिजिक्स में साइंस में एक स्पेक्ट्रम है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक ही विजिबल, बाकी कोई भी चीज विजिबल नहीं। वैसे ही फिजिक्स में हमारे जो आई है उसकी भी एक लिमिट है, नोज की भी लिमिट है और ईयर की भी लिमिट है। तो ये जो वायरस है जो हमें दिख नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखा जा सकता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में पूरे विश्व में आज 750 करोड़ की जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उससे एक चर्चा का विषय बना हुआ। तो ये इस चर्चा के विषय में जो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी में जितनी लेबोरेटरीज है, जितने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने जो है साइंस बेस्ड रिसर्च लेबोरेटरीज है, सबका एक महत्वपूर्ण, सबके साथ एक गंभीर चुनौती और इसमें और चुनौती बढ़ जाती है कि जब WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरा विश्वास भारत पे व्यक्त किया और आपको सभी को मालूम होगा, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जिम्मेदारी भारत के स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया। तो कहीं न कहीं पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो भारत पे लगी हुई और भारत में ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे वायरोलॉजिकल सेंटर है, ऐसे साइंटिफिक इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे ऐसे लेबोरेटरीज हैं जिसमें
जो है बहुत अच्छे और बहुत ही प्रमाणित ढंग से जो है इस पे वर्क प्रारंभ हो गया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज से परीक्षण भी वैक्सीन का शुरू, जिसमें आप देखेंगे कि एक कोविड-19 पे ही जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी प्रोफेसर वास्तव शर्मा साहब जो इस सबको देख रहे हैं, उनका भी कथन ये है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इस वायरस का जो ट्रीटमेंट है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो अभी जो आइडेंटिफिकेशन है जो वुहान ने जारी किया है, जो और रिसर्च लेबोरेटरी ने जारी किया है, वो डिफरेंट टाइप्स के उसके पिक्चर्स वो दे रहे हैं। लेकिन उसका जो सही पिक्चर्स है, उसका जो सही स्ट्रक्चर है, जो सही मॉर्फोलॉजिकल है, वो अभी भी एक इन्वेंशन टाइप है। क्योंकि अभी झारखंड से कुछ न्यूज था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर झारखंड ने एक रोबोटिक्स डेवलप किया। उस रोबोट्स को बोलते हैं कोविड। तो वो जो रोबोटिक्स है, वो सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि आजकल जैसे इंदौर में अभी कई डॉक्टर्स जो है पेशेंट इलाज करते करते वो भी कोरोना से संक्रमित। ऐसे बहुत सारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, और जहाँ जहाँ कोविड अगर लिखा हुआ है तो उसको देख करके पेशेंट भी घबरा जा रहे हैं, डॉक्टर भी घबरा जा रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर झारखंड जो था, उसने कोविड डेवलप किया, रोबोटिक्स डेवलप किया कि कैसे मेडिसिन को पेशेंट तक पहुंचाया जा सके बिना डॉक्टर्स के, बिना नर्स के। वो रोबोटिक्स भी एक कंट्रोल, एक जो है सेंसर के माध्यम से कैसे हम उसको कंट्रोल करें कि जो मेडिसिन है और जो 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 चीजें हैं वो कैसे पेशेंट के द्वारा बिना टच किए तो और उसका, तो इस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा लगा हुआ है कि कैसे हम उसको जो है कंट्रोल करें। तो सबसे बड़ी चीज जो वायरोलॉजिकल लैब है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपका कि जो वायरस को कैसे आइडेंटिफाई करें, और जब तक वो प्रॉपर ढंग से उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, तब तक जो वैक्सीन के जो हमारी जो प्रिपरेशन है, वो एक टेस्टिंग फेज में ही है। इस प्रकार से जो सेंटर्स है, जो साइंटिफिक सेंटर्स है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें अभी कुछ न्यूज में था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हैदराबाद में जो है, उसने कुछ चीजें जो डेवलप किया है, जो इसको एक जीवन लाइट नाम से जो है एक वेंटिलेटर डेवलप किया। इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी से जो जुड़ी हुई जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समय हो रहा है। क्योंकि जो वेंटिलेटर मुझे अदर कंट्री से मंगाना पड़ता था, वो आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो डेवलप कर रहे हैं। इसमें जीवन लाइट नाम का एक उन्होंने वेंटिलेटर जो डेवलप किया है, वो कोविड के कंट्रोल में भी काफी भूमिका निभा रहा है। दूसरा, साइंटिफिक जो इंडस्ट्री है, जैसे आपका RRI है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने भी कुछ मैथमेटिकल टूल्स डेवलप किए हैं कि कैसे उसकी लिमिट हो, कैसे उसके फॉर्मूलाज हो, और कैसे उसके वैल्यूज फिट करें कि जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है, उसकी टेस्टिंग, वैक्सीन डेवलप करना बड़ी चीज नहीं है, बट उसकी टेस्टिंग सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। तो उसके टेस्टिंग के लिए जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स, कुछ फॉर्मूलाज डेवलप किए हैं, और उसमें भी गवर्नमेंट्स काफी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। दूसरा, जो तमिलनाडु का साइंस सेंटर है, तमिलनाडु का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने कुछ वहाँ के साइंटिस्टों ने कुछ मोबाइल ऐप डेवलप किया, और उस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इस कोविड-19 के कंट्रोल में काफी कुछ हेल्प मिल रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग वर्क है, वो टेस्टिंग। तो हमारे यहाँ जो टेस्टिंग जो फैसिलिटी है पूरे कंट्री में, जो है टेस्टिंग फैसिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंजेबल वर्क है। क्योंकि जो टेस्टिंग जो किट्स है,
वो उतने टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है। फिर भी बहुत बड़ी चीज है कि साइंटिस्ट के अलावा हमारे यहाँ कुछ जो टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, डिफरेंट साइंटिफिक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छे ढंग से जो अभी भी वो साइंटिफिक टेस्टिंग किट्स जो है डेवलप कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो साइंटिफिक टेस्टिंग किट्स है वो अदर कंट्री से बहुत रिलायबल है। अभी न्यूज में था कि चाइना से तो बहुत सारे किट मिल गए थे, लेकिन वो किट की जो टेस्टिंग थी वो सही नहीं थी। तो इस प्रकार से जो टेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेबल वर्क है। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है लो कॉस्ट और लो मैकेनिज्म पे बेस्ड जो टेस्टिंग किट डेवलप किया है, वो भी जो है इस कोविड-19 के कंट्रोल में काफी कुछ हेल्प मिल रहा है। दूसरा जो है प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन जो है ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि वैक्सीन जब तक प्रॉपर और सही ढंग से वैक्सीन लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 15 अगस्त तक वैक्सीन डेवलप हो रहा है, कोई बता रहा है सितंबर में, लेकिन जैसा अभी जो WHO का जो इमेजिनेशन है कि हो सकता है दिसंबर तक वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चुनौती ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी कंट्री सबसे वैक्सीन को प्रिपेयर कर लेगा। जी उसमें भी जो आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, USSR है और चाइना है, सबों ने काफी कुछ सफलता अर्जित की है, लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पर ही टिकी है। क्योंकि अमेरिका की एक एजेंसी यही कह रहा था कि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली है, उसका जो टेस्टिंग जो फैसिलिटी है और उनका जो वैक्सीन प्रिपरेशंस का जो प्रोसीजर्स है वो बड़ा सटीक है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा लोगों का है कि ऐसा ना हो कि उस वैक्सीन का निर्माण में सबसे पहले भारत ही आ जाए जो है। और निश्चित रूप से कि जब भी विश्व में महामारी आई है जो है, जब भी ऐसा पैंडेमिक आया है जो विश्वव्यापी महामारी थी, उस समय भी प्राचीन काल में भी भारत जो है में ही इसका इलाज हुआ था। क्योंकि एक बार जब लंका का युद्ध हो रहा था जो है, तो जब युद्ध समाप्त हो रहा था तो बहुत सारे बंदर और भालू घायल हो गए थे, रामादल में भी और रावण की भी सेना में। तो उस समय जो वैक्सीन डेवलप की गई थी, उस वैक्सीन के माध्यम से सभी लोग पुनर्जीवित हो गए। मतलब तो सीधा लिखते हैं कि सुधा बरस को भाल जाए। तो इस तरीके से सुधा मतलब जो है अमृत रूपी एक बारिश हुई थी, और उस अमृत रूपी बारिश में जो है वैक्सीन, जो अमृत रूपी वैक्सीन था, उससे बहुत सारे जो घायल जो हो गए थे सैनिक, उनका इलाज बहुत कम समय में ही संभव है। तो हो सकता है कि ये जो पैंडेमिक है, जो ये सबसे बड़ा चैलेंजेबल पूरे विश्व के साथ आज जिसमें 750 करोड़ जनसंख्या जो है, सब लोग एक भय से व्याप्त हैं, हो सकता है कोई ऐसा वैक्सीन, ऐसा कोई अमृत जो है कि डेवलप हो जाए जिससे सभी जो है इससे लाभान्वित हो। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन की बात है कि सबसे बड़े इसका जो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है, जैसे अमेरिका के बारे में होते हैं कि पहले वो हथियार बनाकर बेचता है, और अब उसकी परिकल्पना है कि कितनी जल्दी जो वैक्सीन जो भी कंट्री बनाए, लेकिन परचेज में खरीद करके फिर सप्लाई में कॉपीराइट में उसका रखूँ है। इस प्रकार से वैक्सीन भी एक चैलेंजेबल वर्क है। बट उस चैलेंजेबल वर्क को हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, और निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्र जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो उसको डेवलप करेगा। और काफी कुछ हद तक उसमें जो है अचीवमेंट भी हुआ है। दूसरा जो फिजिकल साइंटिस्ट है, जो फिजिकल साइंटिस्ट कोविड-19 के बारे में जो उनका वर्क चल रहा जो है, उसमें जो वेस्ट, साउंड वेस्ट, अभी तक जो जैसा साइंटिफिक जो है
लाइबिलिटीज है कि जो वॉयस है जो है, वॉयस जो साउंड सिस्टम पे वर्क करता है, अगर हम उस वॉयस को अगर आइडेंटिफाई कर ले जाएं तो वैक्सीन बनाना और भी इजी हो जाएगा। लेकिन जो वॉयस है, जो उस वॉयस को कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसकी कोई डिवाइस डेवलप किया जाए जो है इसमें इसका रेजोनेंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा कोई डिवाइस जो है वर्क करे, और उस डिवाइस के माध्यम से जो है उसकी जो चैन है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ऐसा फिजिकल साइंटिस्ट जो है, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट है, वो भी वर्क कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हम रेजोनेंस डिवाइस डेवलप करें कि उस रेजोनेंस डिवाइस में एक ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो, और उस ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जो है जो इसका जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए। तो ये जो इसका जो एक्सपैंडिंग है, इसका जो प्रसार है, इसका जो फ्लो है, उसको ब्रेक करने के लिए जो है, उनके जो चैन है उसको ब्रेक करने के लिए जो है एक ऐसा डिवाइस जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड, जो रेजोनेंस बेस्ड डिवाइस हो, और उस डिवाइस से एक पर्टिकुलर रेंज की जो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो, और फ्रीक्वेंसी के जनरेशन से जो है उसका डिस्ट्रॉय उसको किया सके। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने ऐसा वर्क स्टार्ट किया है कि कुछ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेस्ड कोई ऐसा डिवाइस डेवलप किया जाए। तो इस प्रकार से भारत ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, और जितने भी टेक्नोलॉजिकल या बायोलॉजिकल सेंटर हैं, सबके लिए चैलेंजेबल वर्क है, और सभी लोग रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई एक परमानेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो बहुत निश्चित रूप से कि जो कोविड-19 है एक हमारे लिए एक चैलेंजेबल वर्क है, एक प्रॉब्लमेटिक है, बट इसका कंट्रोल भी होगा और हमारी ही कंट्री में होगा, ऐसा विश्वास है। और जहाँ तक इसका जो इफेक्ट है वो टेक्नोलॉजिकल और जो साइंस है उस पर भी जो है काफी पड़ा है, चाहे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हो, चाहे साइंस बेसिक कॉलेज हो, और आपके एजुकेशन सेंटर हो, और पूरे कहा जाए कि जितने पूरी जनमानस है सब पे कोविड-19 का एक व्यापक प्रभाव पड़ा है। और इसका ट्रीटमेंट जो है अभी सब लोग कल्पना बेस्ड है कि कब होगा, कैसे होगा, बट बहुत शीघ्र ही इसका वैक्सीन डेवलप होगा, और भारत जैसे देश इसमें सबसे आगे है, और बहुत ही कम समय में जो है वैक्सीन हमारे बीच में आ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोविड-19 में जो वर्क है वो काफी चैलेंजेबल वर्क है। जितने साइंटिफिक इंडस्ट्रीज है, कोबोटिक्स है, कुछ जो है कुछ सेंसर्स भी डेवलप करने में लोग लगे हुए हैं कि जो मेडिसिन की जो सप्लाई है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा फैल जाए जो है, और उस फैलने में डॉक्टर्स और नर्स की भारी कमी हो जाए। तो उस कंडीशंस में जो हमारे यहाँ जो सेंटर्स हैं उसमें मेडिसिन की हम कैसे सप्लाई करें जो, ताकि हर पेशेंट तक पहुँच सके जो है। तो इसलिए जो IITs के जो स्टूडेंट्स हैं वो रोबोटिक्स बनाने में भी लगे हुए हैं कि एक रोबोटिक्स हो जो एक सेंटर पर है और कंट्रोल एक केबिन के द्वारा हो, और केबिन के द्वारा कंट्रोल करके जो मेडिसिन है वो हर पेशेंट तक पहुंचते रहे जो है, और उसका कंट्रोल किसी एक पर्सन के द्वारा, किसी एक डॉक्टर्स के द्वारा हो, और उसका इंफॉर्मेशन उसी रोबोटिक्स के माध्यम से पेशेंट बाय पेशेंट इंफॉर्मेशन उस डॉक्टर तक पहुंचता है। तो इस रोबोटिक्स के बनने से जो है पूरी कंट्रोल जो है एक जो मेडिकल सेंटर है उसका एक डॉक्टर से एक नर्स के द्वारा भी कंट्रोल हो सकता है। तो इस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल बहुत व्यापक है कोविड-19 के कंट्रोल में, और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि बहुत जल्दी ही कई सारे डिवाइस जो डेवलप हो जाएंगे जिसके ट्रीटमेंट में भी कारगर हों। इस प्रकार से कोविड-19 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक चैलेंज बनकर के आया है, बट साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट किए हैं और बहुत शीघ्र ही इसका निदान संभव है। तो इन चार्ज में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद देता हूँ सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ श्रीवास्तव सर।
हाँ सर, बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा सर आपका। श्रीवास्तव सर, आपने जो समय दिया है और आपने जो अपने जो बड़े रोचक और सरल शब्दों में अपनी बात रखी, आपका हम आभारी हैं श्रीवास्तव सर। मैं आभार के लिए सर्वप्रथम माननीय डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी सर को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लॉकडाउन होने के बाद भी अपना अमूल्य समय दिया और समय समय पर वेबिनार के लिए प्रेरित किया। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने टेक्निकल टीम मिस्टर उमेश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एवं सर्वेश पांडे, इन्होंने दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से संचालन किया, सहयोग दिया। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जितने मेरे टीम के कमेटी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त के क्रम में मैं डॉक्टर M.K. द्विवेदी, डॉक्टर ओम प्रकाश राय और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप सभी ने जो इस विषय पर जानकारी दी, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने बड़े रोचक और सरल शब्दों से मैं अपनी बात रखी, अतः सर आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अनिल दलेला सर, इंटरनेट प्रॉब्लम होने के कारण आपका मैथमेटिक्स भाषा में समझाने का जो प्रयास किया था, गणित के बिना सारा ज्ञान अधूरा होता है। सर आपका मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर J.K. जैन और डॉक्टर J.P. साहू सर, आप लोगों के द्वारा जो दी गई अमूल्य जानकारी इस काल के में हम सब की पूंजी होगी। आपके द्वारा दी गई जानकारी से इस संकट के समय स्वस्थ रहने हेतु संघर्ष करने में सहायता मिलेगा। इस अमूल्य जानकारी के लिए हम आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आसान परिस्थितियों में प्रगति संभव नहीं, हम चुनौतियों का सामना करके ही आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं उमेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो फीडबैक और अन्य जानकारी के लिए देंगे। धन्यवाद सर। आज का सफल आयोजन राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापक, सभी सदस्यों के आपसी सहयोग से संपन्न हुआ और आमंत्रित सभी व्याख्यान विशेष और सभी के लिए सार्थक हैं और बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी गई। आज कार्यक्रम का सफल संचालन संदीप जी के द्वारा किया गया एवं श्रीवास्तव सर जी के द्वारा अध्यात्म से जोड़कर हम सभी के बीच कोरोना महामारी से संबंधित जो समाधान प्रस्तुत किए गए, बहुत ही सराहनीय रहा। आप सभी का हृदय तल से शुक्रिया। इस आयोजन में सबकी सहभागिता मिलती रही। फीडबैक लिंक आप लोगों के ईमेल एड्रेस में सुबह ही प्रेषित किया गया है। यदि किसी को न मिल पाए तो संदीप जी से, सिन्हा सर से भी व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा। शाम से फीडबैक भरना शुरू हो जाएगा, लिंक पहले ही भेज दिया है। पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय परिवार के सभी विभागाध्यक्ष, इस पटल पर मौजूद सभी गणमान्य सदस्य, प्राध्यापक, स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स एवं मेरे साथ महाविद्यालय में काम करने वाले सभी प्राध्यापक गणों का हृदय तल से शुक्रिया, आभार। इसी शब्दों के साथ पुनः मैं
प्राचार्य महोदय के आदेश व अनुशंसा के अनुसार कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। शुभकामनाएं आप सभी को, और इस मीडिया में एक साथ उपस्थित होने के लिए वर्चुअल माध्यम से हम सभी को इतने करीब से देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सबको। लिंक को व्हाट्सएप में कर दिए रहेगा अपने को। मेल में आया होगा क्या आपको? मेल में है, उसको व्हाट्सएप में रख दीजिए। नहीं